In my previous lesson, I have explained you the surds and some basic formulas. Now in this class I will start how to manage the surds, how to go with the surds, right? So now I will explain you question wise. First question you may get like this: simplest rationalizing factor. Simplest rationalizing factor. So this is one of the important concept. So I will tell you what is rationalization. So before we go to the problem, let us understand rationalization. Rationalization is nothing but the process of rationalizing. So that means an irrational number should be rationalized. A process in which an irrational number is rationalized, then this entire process we call it as a rationalization. So irrational number surds we are calling as irrational number. For example, √2 is irrational number. So then how to make this irrational number to rational? Okay, so it is very simple. You have to multiply, you have to divide to make it, because rationalization process इसमें प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू डिवाइडेड बाय एनी ऑफ दीज ऑपरेशंस हो सकता है. अभी √2 को कैसा मल्टीप्लाई करना है? √2 मल्टीप्लाई बाय √2, देन व्हाट हैपन? इट इज़ 2. सो दिस इज रैशनल नंबर. सो अभी ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर को हम एक √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट निकल जाता है. सो देन 2 इज रैशनल. सो इसमें हम क्या किया है? वी हैव अप्लाइड सम फार्मूलाज. प्रीवियसली एक फार्मूला √2. रूट इज सेम बिकॉज पावर इज सेम, 2 into 2. सो √2 into 4, √4 is equal to 2. सो रूट इज डिसअपियर्ड, राइट. सो अभी √2 को हम रैशनलाइज बनाना है तो √2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट. ऐसा एक एग्जाम्पल में आपको समझ में नहीं आता है. आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, राइट, वन मोर एग्जाम्पल. सो let me take one more example. Example number √5, for example. Okay, now √5 into something should be a rationalization, a rational. This should be rational. This is the irrational number, and this will be rationalizing factor. Okay, so now here also it should be √2 and a perfect square should be there, right. So here also √2 should be there, so 5, √5 into 5, √25, 5 square, it is equal to 5. So 5 is rational. So √5 is rationalizing factor. Let me take one more example. That means the same number, इसमें √5 भी सेम है, √5 भी सेम है. अभी इसको हम और एक नंबर ले लेंगे, √8 ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 8. सो इसको हम √8 से एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है. सो इट शुड बी रैशनल नंबर. सो अभी √8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड √2 भी, √8 इज़ वन आंसर, √2 इज़ ऑल्सो वन आंसर. √8 into √8, √64, √8 into √2, √16. So 64 is a square number, 16 is also square number. So अभी ये भी रैशनल बन जाएंगे, ये भी रैशनल बन जाएंगे. बट इसमें से द सिंपलेस्ट नंबर
is root 2. So this we call it as a rationalizing factor. Rationalizing factor of root 8. So root 8 also rationalizing factor, but the simplest one we call it as a rationalizing factor. Simply I will use the word RF. RF means rationalizing factor. इतना बड़ा word लिखने से better, let me use a small notation. Okay, so simplest rational factor. Let me explain you few more examples. You will understand more better if I explain you few more examples. Example 3. Root 12 is there, for example. Root 12 को we want to have a rationalizing factor. RF is equal to how much? What is the rationalizing factor? This is what is the question. Simplest rationalizing factor. So root 12 into root 12, root 12 into root 12 is 12. Root 12 is already one rationalizing factor. But दूसरी भी चाहिए, right? Into root 3 किया, so root 36 होता है. So root 3 will be the rationalizing factor. So ये थोड़ा मुश्किल की बात है. इसके लिए इसको एक छोटा सा प्रोसीजर है. अभी रूट 12 को हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, राइट? अदरवाइज यू डिवाइड रूट 12 विथ ए स्क्वायर नंबर आल्सो. अभी 4 बिकॉज स्क्वायर रूट इज देयर, स्क्वायर नंबर. इफ क्यूब रूट इज देयर, क्यूब रूट, क्यूब नंबर. सो 4 3 ज़ा. अभी रूट 12 एज ए प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या होता है? 4 इंटू 3 होता है. सो 4 इज़ ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ 4. इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं. सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2. ए रैशनल बन गया. अभी ये रैशनल बनना है तो इसको इंटू रूट 3 करना है. सो रूट 3. सो रूट 3 विल बी द सिंपलेस्ट rationalizing factor. Simplest rationalizing factor. Root 12 also, right? Root 12 also. So then there are so many factors which eliminates square root symbol. उसमें से छोटा नंबर simplest वाला rationalizing factor होता है. ओके, सो ऐसा फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद भी आपको ईजिली पता चल जाता है. Let me take one more example. Example number 4. So अभी 40 स्क्वायर रूट ऑफ 48. अभी इसको व्हाट इज़ द रैशनलाइजिंग फैक्टर? अभी 48 को डायरेक्टली आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो. आई टोल्ड यू ना, बिकॉज स्क्वायर रूट इज ए 16 टेबल हो सकता है. 16 ओके, 16 3 ज़ा 48. अदरवाइज 48 से 4 से भी कर सकते. 4 ओके, 12 अगेन 4 टेबल 3. सो एनी वन इज ओके. दैट मीन्स यू कैन राइट 16 into 3 और यू कैन राइट 4 into 4 into 3. दोनों ठीक है. अभी इसको क्या होता है? पहला केस में रूट 16 into रूट 3, इधर रूट 4 into रूट 4 into रूट 3. अभी रूट 16 4 या रूट 3 हो जाता है. इधर रूट 2, रूट 4 इज़ 2, रूट 3. सो दोनों सेम है. अभी इसका हम ये दोनों को सेम है. इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? बिकॉज 4 इज़ ऑलरेडी रैशनल नंबर, रूट 3 का प्रॉब्लम है. सो रैशनलाइजिंग फैक्टर इज़ रूट 3. रूट 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर इज़ रूट 3. So root 3 is the simplest rationalizing factor of root 48. Okay, so root 48 is also one of the rational number, rationalizing factor, but the simplest one is root 3. This is how you have to find out simplest rationalizing factor. At the end of this video, I am going to give you some problems, right? सो यू डू दोज प्रॉब्लम्स. सो देन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजी हो जाता है. प्रैक्टिस मेक्स ऑलवेज मैन परफेक्ट.